nice. It's been a long day. It's still not over. It has been a very long week. Last week. Pathetically tough. Sorry. It is so hot. It's so warm. It's really warm. Really, really warm. That's fine. It's really warm. Sorry. Keeps on pleasing. Weird. If not, you have to return to it. Yeah, this is the right approach. This is a nice.
Okay. That was the point, main point. Yep. Bad question. Bad question a lot. Expand. The question is expand around center. There's a technique for doing this, which I remember from past time. But this is the sequence. Expand around center. So what you have to do? ABC, take it, expand. Take it, expand. Take it, expand. Now, what will be the complexity of it? N square. And that is going to 10 raised to the power 6, which works. I forgot one thing, that in Leetcode, like for example, n is 10 raised to the power 4. If we do n square, which is 10 raised to the power 8, it gives time limit exceeded because the number of operations allowed in that duration is 10 raised to the power 6 or what? I forgot that number, the threshold which you don't have to reach. 10 raised to the power 8. Safety target is 10 raised to the power 7. So n log n is 10 raised to the power 4. So that works. Wait. N log n 10 raised to the power 4 log n, which is 4 आ गया जाएगा. That's fine. 10 raised to the power 5 is also n log n. Okay. If it is 10 raised to the power 3, then n squared will work. And it is n this, so it will work. Yeah. So we can do expand around center, but will we do that? What's up? I think the complexity is n squared. So first let me try to implement it. Hi, ma'am. Hi. So we are going to create, I think, I can create an expand around center function. And we can pass in the string with by reference, so it doesn't make a copy. And oh wait, there is a edge case here because we only take those strings which are, so there is odd and even. So thing is ABC, if you have to check, because this is a odd type, so we take this center and we check, because your palindromic strings can be odd or even, and in odd there is only one center, whereas in even, let's say this is a palindromic string and there are two centers, so we have to keep two indexes I and j, and we have to check around that. There are two centers possible, but in case of odd palindromic strings, I and j will be same. Let me try. You are so hardworking and your content is really helpful. Oh, thank you so much. Means a lot. We have to give the number of palindromic substrings. If it would have been a subset question, it would be DP, but it is substring, so we are going to do it in greedy way. Count, which is 0. We're going to iterate over all possible indices of S. Now,
we are going to take two of them. So if this can return a bool, should it return a bool? Let me think. If we keep on expanding one, that becomes a substring. And if we keep on expanding more, that becomes another substring. So that gives us the count n square. Yeah, fine. So we'll get an answer current, which is expand around center is I is what I and j is what I plus 1. This is for what? Even. Let's say it is even sized. Do we go to I minus 1? I don't think so, because last one would be of just size 1 if we take it as center, because there's nothing of this part. So let's go to size minus 1. Size minus 2 and therefore less than size minus 1. Count is equal to max of current and count. It's not max. We just add current, return current. Now, how the main implementation business logic is that expand around center, and if S of I, only when S of I and J are same. So if S of I is not equal to S of J, then what do? We just return, sorry, it's int. We just return what? One size, because that is also a palindrome. Like one letter is also a palindrome, so we return one. Now, in all of the cases, we run a while loop. We run a while loop while S of I is equal to S of J. What we do is I minus minus J plus plus, and we also have a count which we will keep on incrementing. Count plus plus. Now, this is for even sized, and for odd sized, when I and J are same, if I and J are same, so we move this way, this way, this way, this way, which is also fine. 1, 1, 2, 3, or 1, 2, 3. Okay, I think this will work. I don't know. Let me check. Current. There is a random error. Let me see. I plus 1 should be less than equal to 0. Wait, we didn't check here. Wait. And. Because I is getting subtracted should at all cases should be greater than equal to 0, and j should be less than I dot size. That would solve the runtime error. Okay, there's another runtime error. J plus plus, just fine. ठीक है. I plus 1. We should go till the end. And oh shit, wait. No. It's just ending I. And this is should be fine. Let me think. Can it be 0? It should at least start with 1. Obviously, in those cases, it doesn't comment. This looks fine to me. I don't know. This is new, but I will try and debug it. Looks really fine. Oh wait, we did not call on odd. This is even, but there's also odd. This is odd, and we add
If it is zero size, then that is an issue. S minus 1, which is 0 to 0. Wait. Which is 0 to 0. Oh shit. Oh sh. If I plus 1 is less than s dot size, only then. Otherwise, take even as 0 and update here. Fine. There is another runtime error. Wait. What can be the cause of runtime error here? But we should have paused. Valid only. Oh wait, this should come back. Shit. This is a popular. This is a popular interview question. Because in while loop, the order is linear. The order of operations is linear. Because that will be handled there. Because that will be handled in odd case, so we don't have to actually handle it. And there is another mistake. It misses the last character. Wait. Just return count plus 1 because we missed the last character and it is always going to be an odd sized one size string. Worked. This was an easy question. Let's go on to the next question. House robber. This was easy, we did it. So we are not forgetting concepts. We just need revision. What time is it? I can jump on. We only live for like some time. I can go. Okay, I will accept the requests in some time. I will leave you and accept. Oh shit, wait. Fine, I'm not going to solve it because I've already done it yesterday. I'm for sure not going to solve any maths problem. No, not interested. No maths problem. Let me just leave all the maths. I don't have enough time to solve like maths. Which are nothing on the algorithmic front. Nothing. Quite literally.
Next question is fun question. ठीक है समझ गया. ठीक है. Fine. Fine. Let's try. Sorry. Let me think. We have index. We have K. Do we also need another number? K is what? K is fine. Do we need some IDTS? Previous index. Oh, I'm so sorry. Find all subsets of Allison. Finding all subsets is quite easy. Take all prefix. N square, it can be sorted n square. You have to go into all possible indexes. If you take it, it is part of some subset. So for sure. You don't take it. It's part of no subset for sure. And the sum becomes 0. T also takes sum. It starts from 0. T. Because it doesn't have size yet. Now, bool
take is helper, nums. K. What is K? K is fine. If sum modulo K is equal to 0, return. ठीक है? Now what is going to happen? K. If you take it, it still moves further. But you add this in the sum, which is otherwise you don't take it, the sum becomes 0. पीछे से आया है तो कंटिन्यूअस ही होगा. पीछे से आया है तो कंटिन्यूअस होगा. और कंटिन्यूअस आया है अगर सम 0 है हमेशा करेंगे. Only do this if first is true. If sum is not equal to 0, first is false. If first and if first and take तीन चीजें ट्रैक करनी है. Previous index, sum and count. पर है हमारे पास दो चीजें काउंट करने की. Previous index अगर रख लेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि सम के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं. स्टार्ट होगा और ट्रू कैसे रिटर्न करेगा. ट्रिकी.
Hmm. Hmm. हाँ. Hmm. Bool होगा एक second. Wait. Everything is bullshit. Hmm. You're right. अरे यार, I've already solved this question. Shit. I've already solved this question yesterday. Not yesterday, but on Saturday. Shit. This is a variant of maximum summarism with k-sum. Because if there is a maximum summary with k-sum, then that's that. Oof, shit. This is n square, but then just solve it with prefix sum. I think I'm going to see you guys today. This is guard prefix sum. I've solved this question multiple times today. But I did a mistake. Shit. This was such an easy question. Shit. And I am sure I have solved it before. I've already solved this question. And this question was asked of me in my mock interview. Always think in terms of hash map. If there is a subarray, some question. Some multiple, yeah, shit. Fine. I was aware about this pattern. Wait. What happened? Fine. No, this is not here. Fine. Fine. New question. DP. Looks like DP. Shit. I have solved almost 50 variations of the previous pattern and didn't solve it. Oh. What do I do? Just repent? Maybe. I will mark it, but shit, I've already solved this question multiple times. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solved 7 questions today. What time is it here?
But let me just solve this last question. Sad. So sad. But okay, fine. Let me just solve it. A chess knight has a unique movement. It may move 2 squares vertically or 1 square horizontally, or 2 squares horizontally and 1 square vertically. Hmm. 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 Okay. 2 square vertically, 1 square horizontally, 2 square vertically, 1 square horizontally, 2 horizontally, 1 vertically. With both forming the shape of L. Okay, 1, L, L, L. In all 8 directions. So there are 8 directions in total. This looks like a graph or a DP problem. Every DP problem is a graph problem because every DP problem is DFS. So yeah, every DP problem is a graph problem. So it looks like graph. And this is graph. The possible movements of chess knight are as shown. We have chess knight and phone pad as below. The knight can only stand on a numeric cell. That is blue cell. What? एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन what the hell? Hmm. Hmm. Okay. ठीक है. Hmm. 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 ठीक है. Let's say it starts at 1. So you have allowed to make any number of times. This way, that way, all those ways. And wait. Okay. N minus 1 jumps. To dial a number of length n. 4 लेंथ के लिए 3 जम्प्स करनी पड़ेगी. आई एग्री. जैसे 2 लेंथ के लिए 1 नहीं करनी पड़ेगी. एक नंबर पे तो खड़ा ही है. ठीक है. तो अगर 1 लेंथ का उसका नंबर चाहिए तो 0 जम्प्स करनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पॉसिबल है. ठीक है. सही है. तो 0 से वो कहाँ जाएगा? 0 से इट कैन गो 6 पे या 4 पे. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, कर लेंगे. थोड़ा सा ये लंबा हुआ आई थिंक क्योंकि वो डायरेक्शंस लिखने के लिए. बट ठीक है. Let me fix it. Submit. I have 15 minutes. Yep. N है हमारे पास. Let's start on that. पहले वेक्टर डाल देते हैं. वेक्टर और वेक्टर. And let's mark. Allowed है जाना true और नहीं जाना allowed false. False represents red cells. True represents blue cells. ठीक है. Phone pad. Phone. One, two, 3 times. And then 1 time. देखा यहाँ पे भी हमने यूज कर दिया इसका. एक सेकेंड. ये क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ठीक है. ठीक है. तो ये फॉल्स वाली जगह पे नहीं जा सकता. ठीक है. इतना टफ नहीं है क्वेश्चन. थोड़ा ऐसे घुमा दिया ना तो उनको लग रहा है. हेल्पर
हेल्पर पे हमेशा मैट्रिक्स दे दो। इनिशियली खड़ा है 0,0 पे, मैट्रिक्स नहीं है मतलब फोन है हमारे पास, और क्या देना है, एन देना है, आई थिंक दैट्स ऑल। ठीक है, अब बस ग्राफ की मूवमेंट्स को हमें ध्यान रखना है। ये हम डीएफएस कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जाके देखेंगे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, एन मूवमेंट्स कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, एक पूरा सेट बना लेते हैं 8 डायरेक्शन से। यार इनको कोड कैसे करेंगे भाई, चल करते हैं कोड। ठीक है यार, देखो कैसे करिए मैं बताती हूँ। ठीक है, आई कॉमा जे पे खड़ा है, तो सबसे पहले अगर फोन ऑफ आई कॉमा जे हो जाता है फॉल्स, तो क्या करो, रिटर्न कर दो क्या, 0 इज। अगर आई इज ग्रेटर देन फोन डॉट साइज, ग्रेटर देन इक्वल टू फोन डॉट साइज, और j is greater than equal to फोन डॉट साइज, और j is greater than less than 0, और I is less than 0, we always return false। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैं सबके ना वो बना देती हूँ पोजीशंस। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये यहाँ एक बार क्या, और सबके अंदर एक एक जंप, 2 जंप, 3 जंप कंसिडर होंगे ना। नहीं अच्छा, ये एक पूरा जंप है, वो समझ गया मैं, एक जंप पे पूरा है। क्योंकि 2 जंप के अंदर इसमें एक जंप किया था जो कि इधर है। ठीक है, ये एक जंप है, ये इतना बड़ा एक जंप है ना, लिखा है यूनिक मूवमेंट। हाँ ठीक है, ये एक पूरा जंप है, कोई नहीं। आई के लिए पहले आई 0 1 2 0 पे जाएगा, तो ये आई -2 पे जाएगा, और जे सेम रहेगा। ठीक है, आई -1 आई -2, फिर एक ही साइड जाएगा, तो ये जा सकता है आई -2 जे +1। तो सबके एंड्स लिख लेते हैं, आई कॉमा जे पे है, और ये 8 डायरेक्शन में जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ मैं। देखो ये गया आई -2 जे +1। ग्राफ के नेबरिंग नोड्स निकाल लें, ये हमारा नोड है जो सिर्फ चले हैं, और बिकॉज दिस इज ग्राफ, व्हाई दिस इज ग्राफ, बिकॉज एवरी अदर सेल हैज अ रिलेशनशिप विद दिस सेल, एंड this is a neighbor of this cell, because the knight can only move from one cell to another, so this is the next cell they can move, and this is the adjacent of this cell, and this is an edge. You can call it an edge, but it is not needed here. It goes here, which is I -1 j +2 I +1 j +2 I minus I +1 j -2 I -1 j -2 I +2 j -1 I +2 j +1 I -2 j -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वेक्टर कैसे बनाएंगे, पीछे वालों को स्टार्ट करके और आगे वालों को स्टार्ट करके एक्स का वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे। दिस इज द क्लीनेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। Vector of int x direction, sorry, and vector of int
वाई डायरेक्शन नाम रख लो, ठीक है। हमने पेयर भी बना सकते थे पर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा। I forgot what is that website called. The like the content of it gets resized on like decreasing the dimension, the font size, etc. Scalable website, modular. There was a word I forgot. Adaptable. There was a word. There was one word. Responsive. It is responsive web design. ठीक है। बनाओ x डायरेक्शन कैसे बनेगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं -2 -1 +1 +2 +2 +1 -1 -2, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मेरे को मेटा में पूछा था, मतलब ऐसे ही सिमिलर मान लो। +1 +2 +2 +1 -1 -2 -2 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप रन करो। कहाँ से? 1 i is less than 0, i is less than x डायरेक्शन का साइज या y डायरेक्शन दोनों सेम साइज के कुछ भी ले लो या काउंट करके अपनी जो मर्जी करना है। int न्यू x कैसे निकालेंगे, which is I plus x direction 0, sorry I, and new y, which is y direction plus y direction का j, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लूप दोबारा लगा देंगे। ये देखो ये वाला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे न्यू x should greater than this and new x should not be less than 0. New y should be greater than this and new y should not be 0। और क्योंकि हमें ये बदलना ना पड़े, क्योंकि मैं पागल हूँ, मैंने ऊपर लिख दिया था क्योंकि बेस कंडीशन हमेशा उल्टी होती है रिकर्सिव कंडीशन के, तो हमने कंटिन्यू कर दिया, नहीं तो हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं थी। अभी हम एल्स लगाते हैं, ठीक है। एल्स लगाने के लिए हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे। एक सेकंड, सारी अलग डायरेक्शंस हैं। विजिटेड मार्क करनी पड़ेगी यार, इसे विजिटेड मार्क करनी पड़ेगी। नंबर हमेशा डिफरेंट होगा, नंबर हमेशा डिफरेंट होगा, आई थिंक सो, नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। यहाँ से तो चल इधर तो जा नहीं सकते, किसी में भी इधर से जा सकते हैं, नंबर हमेशा डिफरेंट होगा, तो विजिटेड वाले रखने की जरूरत है। कितना लंबा हो गया, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ तो कोई आंसर आ गया यार। इंट काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, अगर तुम्हारा n की वैल्यू हो गई 1, मतलब 0 जंप्स अलाउड है, रिटर्न करो 0, जंप अलाउड ही नहीं है, जंप अलाउड नहीं है। जंप अलाउड नहीं है। सबको स्टार्टिंग पोजीशन मान के कर दो, एक बार फॉर लूप सब पे चलाना चाहिए इसे, है ना, 0 पे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है वो छोड़ो, क्योंकि लेकिन यहाँ पे तो हम फॉर लूप चला रहे हैं, पर वो नई डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। 1, क्योंकि एक बन सकता है नंबर, है ना, ठीक है, कोई नहीं। n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि एक ही नंबर पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अरे अब काउंट के अंदर ऐड करते जाएंगे हेल्पर ऑफ फोन, न्यू एक्स, न्यू वाई और n-1, ये ध्यान रखना, फॉर लूप से बाहर निकल जाते हैं। 3 माइनस माइनस नहीं चलता ऐसे, तो कोई काम करते हैं, -3 करते हैं, ऐसे चलता तो होगा। एक काम करते हैं, इंट p को 3 लेके और फिर -1 करते हैं, मे बी इट डजंट वर्क ऑन कांस्टेंट्स। हाँ ठीक है, 10 20, ठीक है। फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, int I start from
सब पे जाना है, सब पे जाना है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पोजीशन में सबके फॉर लूप लगाना पड़ेगा। For int I start from 0, I is less than phone dot size, I plus plus. For int j start from 0, j is less than phone 0 dot size, j plus plus. If phone of I comma j is true, which means it is not red sign, then count plus is equal to phone I comma j. Now return count. Oh no, not phone, wait, what the return this, sorry, this, and now they return this, and here make it I comma j. कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो सॉल्व? सी प्लस प्लस में, ठीक है, पर कुछ गलतियां, पूछो क्या गलतियां, what mistake am I doing here? बाउंड्री एक्सेस, वेट तो इसको नीचे करते हैं क्योंकि वो बाउंड्री एक्सेस वाला चेक पहले करना है, अब ठीक है। n equal to 1, ये इसको नीचे करना, ठीक है। नाउ 10 मिस्टेक, एक सेकेंड यहाँ पे गलती करिए, हाँ ठीक है, फोन डॉट से it is number of rows, it is 4, 1 2 3 4, phone 0 dot size, एक सेकेंड, शिट, एक गलती कर दी, वो 3 से ज्यादा पे जा ही नहीं पा रहा है, रुको अब मैं ठीक कर दूंगी। देखो यहाँ से गलती स्टार्ट हुई है, आई जो है वो रो है, तो रो का मैक्सिमम क्या है, रो इनटू कॉलम, जी का मैक्सिमम क्या है, फोन 0, यहाँ पे क्या आएगा, फोन 0, ठीक है, एक मिनट, बी कोई और गलती कर गया, एनीथिंग एल्स, ओह आई को ओवरशैडो कर दिया यहाँ पे, शिट, ओह शिट, आई तो अपना वो था ना, तो कुछ और नाम रखो, एक काम करो, इसका पी रखो, पी, पी मतलब पोजीशन, ठीक है, आई और जे ओवरशैडो नहीं हो, ठीक है भाई, छोटे छोटे कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। हाँ, और क्या गलती करी है, और आई और पी उधर अपडेट किया मैंने, हाँ, और रॉन्ग की और जे यू माइट नीड, एक सेकेंड, anything else, anything else, इंटीजर ओवरफ्लो, हाँ वो मॉड, क्या बोला इसने, रिटर्न फॉल्स किया मैंने, कहाँ पे किया रिटर्न फॉल्स, 0, रिटर्न 0, ये इंट है, फॉल्स वन हो जाना, मतलब फॉल्स भी तो 0 ही होता, ठीक है। अच्छा चल पड़ा, मेमोराइज करना है, रुको मैं मेमोराइज कर दूं फटाफट, यहाँ नहीं करते, यहाँ मुझे कुछ जाना है, ठीक है मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, फिर मैं कर जाऊंगी, वेक्टर ऑफ ई डी पी, आई क्रॉस जे कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, दे विल गो फ्रॉम फोन डॉट साइज से लेके फोन 0 डॉट साइज तक जाएंगे, और -1 तक, ठीक है, और इसको हम भेजो टीपी को,
डीपी को हमेशा नया बना लो, बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नया बनाता हूँ, या बनाता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर dp of I comma j is not equal to -1, return dp of I comma j, ठीक है, dp of I comma j। ये लीड कोड क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है, आप सर्च कर सकते हैं, इस पे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, मतलब आपको सैलरी मिलेगी। चलो, चल पड़ा। बस एक गलती है कि हमने मॉड्यूलो करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 10⁸8 + 9 का। हाँ ठीक है, मॉड्यूलो करके आंसर देना, मॉड्यूलो तो मॉड बनाता है, क्या पे ऊपर बना देता है, ऊपर क्यों बनाना है, यहाँ बना देते हैं, लॉन्ग मोड पावर ऑफ 10⁹9 + 7, ये तो बना दिया मैंने, और अब इसको मोड परसेंटेज मतलब रिमाइंडर मोड करके देना है आंसर। देखिए चल रहा है, कुछ तो गलती है। Return the answer modulo this, module तो कर दिया। Now what is the mistake? Now what is the mistake? The hell? ये भी नहीं सोचा ना, घर में जाके करेंगे बाकी का। Your memorization state. This is 3D. ओके गाइस, अब घर जाके करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे रास्ते में जाना गया। बाय, आई एम एंडिंग दिस टाइम।